हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं और ये पार्ट 3 है इस टॉपिक का, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले इस टॉपिक पे अपलोड हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री? ए, द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग द सैंपल। बी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आयंस बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। C, the process of breaking a molecule into smaller ions. And D, the process of detecting ions. Correct one is C, the process of breaking a molecule into smaller ions. यानी कि फ्रेगमेंटेशन, कोई भी चीज का फ्रेगमेंटेशन कब होगा? जब उसमें फ्रेगमेंट कब बनेगी? जो ब्रेक डाउन होके फ्रेगमेंट बनते हैं। तो इस सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस दिए हुए उनमें से ब्रेक डाउन मीनिंग कौन सा समझा रहा है? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज द combination of electric and magnetic fields to separate ions? A, quadrupole mass spectrometer. B, the ion trap mass spectrometer. C, the magnetic sector mass spectrometer. And D, the orbit trap mass spectrometer. Correct one is C, the magnetic sector mass spectrometer. यानी कि जिस मास स्पेक्ट्रोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है उसका नाम क्या हो गया? मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म रिजोल्यूशन रेफर इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर? ए, द एबिलिटी टू आयोनाइज द सैंपल। बी, द एबिलिटी टू डिटेक्ट आयंस। सी, द एबिलिटी टू सेपरेट आयन विथ सिमिलर मास टू चार्ज रेशियोज। D, the ability to measure the intensity of ion signal. Correct one is C, the ability to separate ion with similar mass to charge ratio. It called resolution. Next है, which ionization method is often used for volatile and thermally stable compounds? A, electrospray ionization ESI. B, chemical ionization CI. C, matrix assisted laser desorption ionization MALDI. D, electron ionization EI. Correct one is D, electron ionization is a method of ionization used for volatile and thermally stable compounds. Next है, in tandem mass spectrometry MS experiment, what is the purpose of first mass analyzer? A, to ionize the sample. B, to fragment the ions. C, to separate precursor ions of interest from the rest of the ions. And D, to detect ions and produce a mass spectrum. Correct one is C, to separate precursor ions of interest from the rest of the ion. जो हमारा interest of ion है उसको जो rest of the ion है उनसे अलग करना पहले स्टेप में, वो क्या कहलाएगा? एमएस एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट मास एनालाइजर है उसका ये फंक्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉन फॉर ट्रैपिंग आयंस एंड परफॉर्मिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ मास एनालिसिस? ए, क्वाड्रापोल मास स्पेक्ट्रोमीटर। बी, आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर। सी, टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर. And D, magnetic sector mass spectrometer. Correct one is B, ion trap mass spectrometer. It is as it mentioned trapping ion, तो उसके बेसिस पे इसका नाम है ion trap mass spectrometer. Next है, which technique can be used to determine the structure of a molecule by analyzing its fragmentation pattern? A, UV visible spectroscopy. B, infrared spectroscopy. C, mass spectrometry. And D, nuclear magnetic resonance NMR spectroscopy. Correct one is C, mass spectrometry. Next है, what does the term ion trap refer to in mass spectrometry? A, a device that capture and hold ions using electric fields. B, a device that ionize the sample. C, a device that separate ions based on their mass to charge ratio. And D, a device that detects ions and produces a mass spectrum.
Correct one is A device that capture and hold ion using electric field. As it mentioned ion trap. ट्रैप का क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज को कैप्चर करके होल्ड रखना. नेक्स्ट है इन मास स्पेक्ट्रम व्हाट डज द टर्म रिलेटिव अबंडेंस मीन? A the absolute number of ions detected. B the percentage of particular ion relative to the most abundant ion. C the mass of an ion relative to the charge number. And D the time it takes for an ion to reach the detector. Correct one is B the percentage of particular ion relative to the most abundant ion. It is relative abundance. Next है which mass analyzer is known for high mass accuracy and resolution due to its trapping of ions in the stable electrostatic field? A quadrupole mass analyzer. B time of flight mass analyzer. C orbitrap mass analyzer. And D magnetic sector mass analyzer. Correct one is C orbitrap mass analyzer. As it mentioned trapping of ion and trapping ये सेम वर्ड इसमें आ रहा है orbitrap, तो इसका ये करेक्ट हो गया. नेक्स्ट थैंक यू सो मच.